अपने अपने गोल्स कमेंट में लिख देना एंड कंप्लीट होने के बाद रिप्लाई कर देना. आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट्स. जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे वैसे मैं रिप्लाई करूँगा. ठीक है गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 5:34 PM. आज सुबह थोड़ा सा रश था मेरे को, लाइक इधर उधर जाना था. पहले तो मैं थोड़ा सा लेट उठा. आई वोक अप एंड देन इमीडिएटली आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स मैंने लंच कर लिया एंड फिर लाइट चली गई थी घर में. सो लाइट गई तो मैं ऐसे ही बैठा था सोफ़ा में, कुछ कर नहीं सकते लाइट गई है तो. सो फिर जब लाइट आई आई हैड टू रश एंड टेक अ शावर एंड रश टू अ शॉप टू बाय सम ऑयल. सो ऑयल लेने के बाद मैं वापस घर आया हूँ एंड अभी आई गेस 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले मैं घर आया हूँ. ठीक है. So yeah guys, it was a day filled with a task which I had to rush to complete क्योंकि 5 बजे वो शॉप बंद होती है and I had to drive the scooter so fast to reach there. Anyways guys, आज के दिन में मेरे को ट्यूशन्स लेना है, 1 hour ट्यूशन लेना है and also पढ़ाई करनी है and जिम जाना है. Okay, now I'm not consistent with gym right now but I have to be consistent because मेरा weight बढ़ रहा है and that's not a good sign, right? Since I have eaten a lot of sweets in the past few months, 1 or 2 months, past 1 or 2 months, I have gained weight because sweets खाने से, if there is not enough activity, it goes into fats and plus the diet is filled with carbs, so it's like it sucks both ways. Home food also sucks. The only thing that really sucks is that I'm a vegetarian. Vegetarian diet में तो पूरा carbs से भरा हुआ होता है. At least non-veg diet में there is still meat and there is still protein content, a lot of protein content in that diet. So that's why it's much better diet, to be honest. But vegetarian diet है and vegetarian घर के food में पूरा carbs से भरा हुआ होता है. And I can't even do anything because I am so tired these days. I can't even cook for myself right now. I don't have the time. Plus, वो झंझट नहीं चाहिए मुझे. Like हमारे किचन में हर टाइम क्लीन रहना चाहिए. किचन देखो, हर टाइम क्लीन रहना चाहिए. एक भी डिश नहीं होनी चाहिए इधर. फुल टाइम क्लीन रहना चाहिए. And I can't do that when I'm cooking. I just keep the plates there because I have ADHD brain. So I procrastinate to even wash my dishes. So I wash them obviously, but after a long time, and that's not a thing that my mom likes. So इसलिए मैं cook करने भी नहीं बैठता हूँ, to be honest. But yeah, anyways guys, अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा milk पीऊँगा and उसके बाद मैं जाऊँगा gym. I don't think I'll do weight training. I'm literally feeling a little bit of tiredness. So इसलिए मैं weight training नहीं करूँगा because I don't want to feel much more tired क्योंकि मुझे फिर tuitions भी लेना है and फिर रात को पढ़ाई भी करनी है. So that's why I'm planning to just go to gym, do some cardio and maybe normal flexibility workouts or something. I don't know, warm up, I could say. Just do some warm up and cardio and come back home. Yes. So I won't be recording much at gym. Maybe I might not record at all at gym. But the thing is वहाँ पे क्या ही record करूँगा. मैं edit भी नहीं करता और उधर अगर music play हो रहा होगा तो फिर वो music निकालना पड़ेगा and वो सब it's like a little annoying. I prefer to have clips with nothing that I have to edit and I just put it in an editor, combine them all and upload for these videos. So yeah guys, gym जाऊँगा मैं अभी थोड़ी देर में, most probably at 6 PM and then I'll come back around 7 PM or maybe 6:45 PM and उसके बाद dinner time होगा. dinner के बाद मैं सोच रहा हूँ उसको बुलाऊँगा ट्यूशन के लिए. So that in that case what will happen is that after dinner मेरे को जो procrastination होता है वो कम होएगा क्योंकि ट्यूशन्स लेना पड़ेगा and उसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं. Okay, so I'll see you guys when I'm studying at night.
क्योंकि in between that I don't think I'll be recording anything. There's nothing interesting to record, man. I'm alone in this house. There's nothing fun that happens every day which is interesting for you guys to watch. So yeah, अगर कुछ interesting हुआ तो record करूँगा, वरना मिलते हैं when I'm studying. Guys, अभी टाइम हो रहा है 12 AM and I almost broke my consistency of studying. Yeah guys, I procrastinated like hell and मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक. मैंने ट्यूशन्स भी जो टाइम था वो टाइम में procrastinate किया and उसको बोल दिया कि I won't be able to take today during this time. And yeah, मैंने पूरा procrastinate किया. जिम भी procrastinate किया. मैंने लेट गया जिम, बट एटलीस्ट मैं गया जिम. मैंने एटलीस्ट थोड़ा सा तो ट्रेडमिल किया उधर. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई डिड इट, बट मैंने थोड़ा सा ट्रेडमिल कर लिया एंड देन आई केम बैक. सो बेसिकली आज पूरा प्रोक्रास्टिनेट किया हूँ. दैट इज़ लाइक it was like almost I broke my consistency of studying and I am not gonna let that happen. ठीक है, I am not gonna let that happen. जो भी हो जाए पढ़ के ही सोऊंगा मैं आज. कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. You know guys, ADHD brain, it's so fucking hard to, you know, do things, achieve the goals. Like procrastinate इतना ज़्यादा होता है ADHD brains. You know, just staying consistency is hard. You might be thinking like, Dheer, why are you just studying 15 minutes? Why don't you just study like, you know, every day 4 hours and ऐसा सब. But like guys, you know, it's really hard to even sit there for 15 minutes when your brain is like, I don't want to study, that kind of a thing. So yeah, at least for me, you know, staying consistent and just you know, studying every day even for 15 minutes is like a big success. Because yeah, when you are not in a mood to study, it's like super hard to study. ठीक है, so that's why I just got up. I was like, no, I'm not gonna let the consistency break. And अभी आ चुका हूँ अपने study table पे. And I will, hope नहीं है, but like I'm not hoping that I will, but I'm sure that I will study at least, you know, go through one video. हो सके तो 2 वीडियो, अगर मूड लग गया तो फिर पढ़ते जाऊंगा, बट एटलीस्ट एक वीडियो ख़त्म करूंगा प्लेलिस्ट से, जो भी प्लेलिस्ट से मैं पढ़ रहा था. सो आई हैव ओपनड अप हियर. ओ माय गॉड, स्क्रीन सेवर चल रहा है उमर की लिनक्स का. वी कैन क्लोज दैट. ओके, yeah, that's the thing I always forget. Screen saver escape की से क्लोज करना चाहिए. बट या बेसिकली मैंने अपना प्लेलिस्ट खोल दिया है उमर की लिनक्स में. सो आई एम जस्ट गोना स्टडी नाउ. एंड मैंने थंबनेल के लिए भी फ़ोटो ले लिया. सो या गाइस, ये प्लेलिस्ट में मेरा नेक्स्ट वीडियो ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम. आई हैव डन टिल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स ओवर हियर. अब असाइनमेंट प्रॉब्लम और ये है 2 वीडियो है. शायद मैं ये दोनों ख़त्म करके ये प्लेलिस्ट ख़त्म कर लूँ, बट लेट्स सी गाइस कितना पढ़ता हूँ मैं. 6 मिनट के वीडियोस है. होपफुली आई कैन कंप्लीट दोज 2 वीडियोस. बट 6 मिनट के वीडियोस तो है, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना चाहिए. तो वो समझते समझते मे बी 10-15 मिनट्स लगेगा पर वीडियो. पर या गाइस, पढ़ेंगे हम. कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंसिस्टेंसी फॉर श्योर. सो या गाइस, आई सी यू गाइस वंस आई एम डन स्टडीइंग. Guys, I have finally finished those 2 videos which I showed you guys from the playlist, and now the playlist is over, and now I can finally be peaceful that I was consistent today. Obviously I did not study that much, but yeah, I will soon. You know, as the exam comes closer, I'm surely gonna be much more productive. For now, I just have to stay consistent. Yes, that's the main goal. I just have to spend some time every day sitting on this chair doing something that's productive, learning something. And yeah, that's what I'm doing right now. So yeah guys, this is what I did. I finished this entire playlist. This is the last video of the playlist. Yes,
and I've finished this entire playlist. Yes guys, I just went back for a nice thumbnail photo. That's it, I finished the video. And yes guys, this is all the notes that I've taken. Yep. Yes guys, yeah, my notes can be really messy and bad handwriting, but I just take them so that I can, pay attention in the class. But yeah guys, you can, ignore the handwriting and how the notes look like. The main idea is to study and understand the concepts. So yeah guys, आज के लिए इतना ही. आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ एंड देखते हैं क्या करता हूँ मैं अभी. मैं भी थोड़ा सा यूट्यूब देखूँगा. आई डोंट नो बिकॉज the best thing to do is just to watch all the videos of YouTube, whatever is making me think that I want to watch it, so that during the exam time, when the exam time comes closer, I don't get distracted by those videos coming back to my feed. Because if you don't know, people with ADHD brain kind of feels hard for them to resist the temptations. Like if I am feeling like I want to eat ice cream today, it's very hard to resist unless the ice cream is not there at home at all. So that's the good thing. If there's no ice cream or sweets or pastries at home, then even if I feel tempted to eat that, since it's not there at home, I will be too lazy to go out and buy one of those things and eat. So that's the only good thing that I like about my home, is that we don't actually stock ice creams and stuff at home unless there is some special occasion like Dev Diwali and Sal Mubarak, when guests will be coming at home. That's when we purchase ice cream, and that's why I ate a lot of ice cream recently, and that's why I'm getting fat. I have to fix it. But yes, that's one thing good about my home, that we don't stock those things, and that's why I don't like eat everything and become fat so fast. But yeah, that's pretty much it for the day guys. हम मिलेंगे कल, एंड होप करता हूँ कि कल का दिन थोड़ा और प्रोडक्टिव होगा. वी नेवर नो गाइस, मेरा ADHD ब्रेन को क्या करना है आई डोंट नो. बट कल मेरे को ट्यूशन्स भी लेना है. सो यस, आई हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. कल भी मैं पढ़ूँगा. आई वोंट not study in a particular day, no matter how busy the day is or how much I procrastinate. ठीक है गाइस, तो कल के वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, एंड होप योर गोल्स आर गेटिंग completed. See you guys in the next video. Bye bye.